Hello, children, and welcome to today's session. As little children, we were told some of the basic differences between living things and non living things. We were told that living things need water to drink, living things need air to breathe in, living things need food. Now, amidst all these differences, we were also told another thing. We were told that there are biotic components in the environment and abiotic components. So, your plants, animals, and us human beings become the biotic component, and air and water become the abiotic component. But these two abiotic components play a very, very important role in our lives. And this is what we are going to learn in the lesson today, which is on water, a wonder liquid. और वो blue planet क्यों है? Because 3/4 of the Earth's surface is covered with water. There are 5 main oceans, if you can recall them: the Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and the Antarctic Ocean. Now, all the living beings depend on this water, but then the percentage of water that we can use is only available in rivers, ponds, lakes, and the polar ice caps. All this water is fresh water, and this water is steadily diminishing, as we all know that. So we know that surface water जो होता है वो rise करता है as water vapor. इस evaporation से sky के अंदर clouds बनते हैं और इस cloud से rain आती है, जो रेन वापस इस सरफेस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. सो क्योंकि वही वाटर ऊपर गया और वही वाटर नीचे आया, दैट इज द रीजन वाटर इज नोन एज अ रिन्यूएबल सोर्स, लाइक सनलाइट, like air. We have just discussed that this fresh water that is available for human consumption is limited. Let us understand what are the sources of fresh water. So the purest form of water that comes down on earth is called rain. It is the main source of fresh water on earth. लेकिन रेन जैसे जैसे नीचे आती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रेन वाटर गेट्स पोल्यूटेड, इट बिकम्स इम्प्योर और इसको हम नहीं पी सकते. नाउ दिस रेन वाटर वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दैट कम्स फ्रॉम दिस वाटर साइकिल. और इस वाटर साइकिल में वाटर ऊपर ज्यादा जाए उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने होते हैं. जिन एरियाज में ट्रीज नहीं होते उनमें रेन भी कम होते हैं, एंड जहां रेन कम होता है वहां होते हैं ड्राउट्स, और जहां रेन एक्सेस होता है वहां होते हैं फ्लड्स. लेकिन अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना लें कि रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करें with the process that is called rain water harvesting, then probably we can make the best use of this rain water that is coming down. The second source of fresh water for earth is known as aquifer. What is an aquifer? It is the water that is collected in the space below the porous layer of rock. Now this water remains there because there is a hard layer of rock and it cannot seep any further. ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर की सप्लाई हमें मिलती है वेल्स और ट्यूबवेल्स से. ग्राउंड वाटर is once again the soil that is found below horizon sea. This water is very, very important, and this water is actually the water that is providing for major human population. This is used for irrigation. This is also used to run the motor pumps inside your houses. लेकिन ये ग्राउंड वाटर के साथ हो क्या रहा है? ग्राउंड वाटर कैसे सीप इन करता है? जब सॉइल का लेयर होता है. अगर ये सॉइल का लेयर ही नहीं होगा तो सीमेंटेड फ्लोर के अंदर ग्राउंड वाटर कैसे सीप करेगा? सो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि सिटीज के बढ़ने की वजह से देर इज कॉन्क्रीटाइजेशन. Concretization means that there is no soft soil anywhere because they are all roads or houses. Because of this concretization, rainwater cannot go down. यही कारण है कि ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है. So we see how increase in population and
agriculture is becoming a major factor in decreasing the groundwater, as also the increase in industries. So once again, all these are reasons because of an increasing population. Now we as human beings have the responsibility to take care of all these things, because a balance in biotic and abiotic components is what keeps life thriving on earth. Let us now also understand the various reasons for water pollution. We know that there is sewage disposed out of both our houses as well as factories etc. अब इस सीवेज की अगर ट्रीटमेंट ना की जाए, इसमें हार्मफुल एलिमेंट्स जो होते हैं, हार्मफुल मटेरियल जो होते हैं, उन्हें क्लीन किए बिना इन्हें फ्रेश वाटर सोर्सेज में डाल दिया जाए, सो दोज फ्रेश वाटर सोर्सेज विल आल्सो बिकम डर्टी. The second thing is industrial pollution. Again the same thing. इंडस्ट्रीज के अंदर से भी जो पोल्यूटेड मटेरियल निकलता है, पॉइजनस मटेरियल निकलता है, दैट मिक्सेस विद द फ्रेश वाटर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. देन देयर आर इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. कुछ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो जब पानी के साथ वॉश अवे होके रिवर्स में पहुंच जाते हैं, दे बिकम वेरी वेरी poisonous. There are certain religious and social practices, जैसे ashes या dead animal के carcasses को water में flow कर दिया जाता है. Because of this, the water once again becomes impure. There are means of water conservation that we all can practice in our daily life. The first one we have already discussed is rainwater harvesting. Rainwater harvesting के अंदर क्या होता है? जो रेन वाटर होता है उसको घर के नीचे एक टैंक के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है फॉर लेटर यूज. फील्ड के अंदर भी when we are watering the fields, we can use methods like drip irrigation rather than using tube wells and making the water run here and there. Then, in order to prevent floods, we have to make dams on rivers. Dams क्या करते हैं? Excess rain water को store कर लेते हैं. And this water can be released slowly as and when required. Also, अगर हम अपने घर के आसपास ग्रीनरी बनाएंगे, गार्डन्स बनाएंगे, तो उससे सॉइल सरफेस इंक्रीज होगा. सॉइल सरफेस के इंक्रीज होते ही वाटर पर्कुलेशन इंक्रीज होगी और क्या बढ़ेगा? ग्राउंड वाटर. There are also means and ways that we can use in our own house. Do not leave the water running when you are brushing. Do not use a shower or a water hose when you can use a bucket and a mug of water. Do not let the water dripping from your taps. These are a few basic practices that we can follow in our everyday life and encourage our families and friends also to do the same. So in this chapter, we have learned how water is a very, very valuable resource. We have learned how we obtain fresh water, how this fresh water gets polluted, and what is our role in water conservation. Thank you.